So friend, we brought you today to the most beautiful house in Isfahan. Sami Aziz, welcome to Mollabashi House, the most beautiful house in Esfahan, जिसको मोतमदी house भी कहते हैं. It includes the work from the era of Safavi, Zan and Qajar dynasty. Yes, that's about 400 years old, the history of this house. Exterior and patio not surprising, but once you enter the home, it is so attractive and fascinating. As you can see that this house is dedicated for the restoration for about 7 years by this Mutamadi family. तो दोस्तों ये घर जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. इनर कोर्टयार्ड, आउटर कोर्टयार्ड और समर हाउस. ये जो आप अभी आउटर कोर्टयार्ड देख रहे हैं ये कमरे के सामने है और सामने का कमरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा सन से एल्यूमिनेशन देता है, जो कि अभी आपको दिखाएंगे हम. ये शान नशीन रूम कहलाता है. शान नशीन रूम जो है वो बहुत ही, जहाँ पे शाह नशीन शाह बैठता था, बहुत ही खूबसूरत है. यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्लास वर्क बहुत अच्छा है. छत पे जो है रूफ वर्क बहुत, सीलिंग पे बहुत अच्छा काम हुआ है. कारपेट यहाँ का सबसे महंगा कारपेट कहलाता है, हाथ से बना हुआ कारपेट है. उसके अलावा ये जितना भी आप शीशे का काम देख रहे हैं, स्पेशली कलरफुल और शैंडलियर्स जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव. ये जो शीशे का काम शिराज में ज़्यादातर होता है, ये बहुत ही डिटेल काम और बहुत ही खूबसूरत काम है. The Qajar dynasty, that time the house was survived the massive destruction during the rule of Zilul Sultan, the son of Nasiruddin Shah. So one of the king of the Qajar dynasty in Esfahan. So this was actually bought by the very famous astronomer whose name was Mollabashi. That's why we call this house by this name. इस रूम में जो है ज़्यादातर बैठक होती थी शाह नशीन, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर ये जो है ना वो तकरीबन 9 दरी है. 9 दरी जिसको कहते हैं, 9 दरवाजे खुलते थे सहन की तरफ, जहाँ से समर की सनशाइन आती थी. और दीवारों और छतों के जो डिटेल काम है वो आप देख रहे हैं, जिसमें आपको नज़र आएगा कि बेसिकली ये मीटिंग रूम होता था. और यहाँ पे जो है वो मेहमान आके बैठक जिसको कहते हैं, बैठक कहलाती थी. किस कदर खूबसूरत है ये आप देख रहे हैं. इसके दीवारों के ऊपर जो काम है, दैट इज़ जस्ट वाओ. stained glass, wall decoration, mirror walls, a lot of different amazing detailed decoration. The house is also being declared as registered as National Heritage in 2002, and it is actually located in the center of Isfahan on Hash Bahish Street. Each room in this house has a specific perfect decoration. The painting, stained glass, writings demonstrate the architectural differences of Qajar and Safavid eras. This is the basement of the house. From the courtyard, the staircase is going inside down in a basement, which is also used for dining and also for sitting. इसको अब म्यूज़ियम भी बना दिया गया है. यहाँ पे पुरानी चीज़ें भी रखी हुई हैं उस ज़माने की, 400 साल से लेके अब तक की, जिसमें से असलहा भी है उस ज़माने का और बाकी एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी. और बेसमेंट ईरान में हमेशा यूज़ होती थी क्योंकि ये हमेशा गर्मियों में आपको ठंडा रखती थी. घर को ठंडा बेसमेंट में हमेशा जो है ना वो हमेशा एक खौनक और मॉइस्चर और जो है ना आपको एक कूल फीलिंग, जस्ट लाइक एयर कंडीशन फीलिंग आती थी. बीच में एक हॉज भी होता है. ये इस घर का मास्टर बेडरूम या स्वीट है, जो कि इस घर का जो ओनर हमेशा यूज़ करता था. बहुत ही खूबसूरत इसमें आर्किटेक्चरल डिज़ाइन आपको नज़र आएगा, पुराने ईरान का पर्शियन आर्किटेक्चर. देखें एक बेड के पीछे मेहराब के ऊपर किस कदर ज़बरदस्त खूबसूरत डिटेल काम हुआ है. दैट इज़ ऑल हैंड क्राफ्टेड. अ ग्रेट डिटेल वर्क हैज़ बीन डन इन दिस मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस, which has been used with probably the owner of the house. This room has different sections. So then this traditional Iranian architectural based room has also the color mirror work. These can be opened towards the courtyard for the sunshine and air that can come inside. Then the other section of this room, there is a staircase that goes up
where people can also sit and drink tea next to the bathroom. And the traditional staircase with the traditional architecture, you can go up and then sit over there. There is also a place where you can actually look through inside the room from the top. um, this is from where you can drink the chai, sit, and also take a view from both sides inside the room and towards the courtyard. Amazing architecture, a fine architecture. Go outside, then there is another outer courtyard जिसके हम ऊपर जा रहे हैं, जहाँ से आपको बाहर वाले कोर्टयार्ड की गैलरी एक तरह से है, या पैसेज एक तरह से है, जो कि और बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क उसमें हाथ से हुआ है। 400 साल से हो रहा है ये काम, या 400 साल का है ये काम। तो उसके अंदर आपको बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर नज़र आएगा, ओल्ड एंशियंट स्टाइल आर्किटेक्चर। सो मुल्लाबशी historical house along with other important Isfahan tourist attractions such as Naqshe Jahan, Ali Qapu, Chahal Situn, and so many other ones, always inside the itinerary of people who tour towards the Isfahan. If you need any tour services or anything, please, you can always contact us and we can provide you with the detailed itinerary and help you with the tour. So दोस्तान अजीज, once again thank you for watching the video and do not forget to subscribe. हमें बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस हम आपको भेजते रहें।